ज्योति स्टेनोटाइपिंग कॉलेज में आप सभी का स्वागत है बच्चों। ये लीगल डिक्टेशन है। ये जितने भी कोर्ट्स हैं, सेशन कोर्ट हैं, सेशन कोर्ट हैं, हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, ये सभी कोर्ट्स के लिए इम्पोर्टेंट डिक्टेशन है। इसको पहले मेरे साथ अच्छे से शॉर्ट हैंड में लिखिए। जैसे जैसे मैं पढ़ता जाता हूँ आप शॉर्ट हैंड में लिखें। शॉर्ट हैंड में लिखने के बाद इसको तुरंत पढ़िए, पढ़ने के बाद इसको टाइप कर दीजिए। मैं आपको पहले ही बताया था क्लासों में, हर क्लास में बताऊंगा। इसमें जो है, जो लीगल डिक्टेशन होती हैं, इसमें मिस्टेक्स ज़्यादा ना करें। जो आप टाइप करेंगे, जो हमारी वेबसाइट है ज्योति स्टेनोटाइपिंग कॉलेज.com, यानी कि जो ये नाम है इसके आगे .com लगा दो, वेबसाइट खुल जाएगी हमारी। तो उस पर जब आप टाइप करोगे इसको, वहाँ सॉफ्टवेयर है, तो उसमें आपकी गलती 5 से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। अगर 5 से ज़्यादा गलती नहीं करोगे तो आप किसी भी कोर्ट में सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, तो मैं पढ़ने जा रहा हूँ लीगल डिक्टेशन नंबर 8 है। लीगल डिक्टेशन नंबर 8। ये फैन बंद करना आशीष। इसकी आउटलाइन वगैरह देखनी हो तो जैसे उसमें देख सकते हैं आप, PDF दे रखी है, उसमें 1-2 आउटलाइन गलत है। जिसमें एक वर्ड है, मैं पहले ही बता देता हूँ, वर्ड है स्ट्रिक्टो। तो उसमें जो आउटलाइन बनी हुई है वो स्ट्रिकोट की बनी है। तो स्ट्रिक्टो में आपको क्या करना है, उसमें T बना लेना है, के को पूरा बना करके। ठीक है, तो ये मेरे को उसमें आउटलाइन गलत दिखी थी, वो मैंने बता दी है। डिक्टेशन स्टार्ट आफ्टर 5 सेकेंड। While dealing with a claim petition in terms of section 166 of the Motor Vehicles Act 1988, a tribunal stricto sensu is not bound by the pleadings of the parties, its function being to determine the amount fair compensation in the event an accident has taken place by reason of negligence of that driver of a motor vehicle. It is true that occurrence of an accident having regard to the provisions contained in section 166 of the Act is a sine qua non for entertaining a claim petition, but that would not mean that despite evidence to the effect that death of that claimant's preceders had taken place by reason of an accident caused by a motor vehicle, the same would be ignored only on the basis of a post-mortem report. The deceased was a constable. Death took place near a police station. The post-mortem report clearly suggests that the deceased died of a brain injury. The place of accident is not far from the police station. It is therefore difficult to believe the story of the driver of the bus that he slept in the bus and in the morning found a dead body wrapped in a blanket. If the death of a constable has taken place earlier, it is wholly unlikely that his dead body in a small town like Dharampur would remain undetected throughout the night, particularly when it was lying at a bus stand and near a police station. The learned tribunal, in our opinion, has rightly proceeded on the basis that apparently there was absolutely no reason to falsely implicate the respondent numbers 2 and 3. Claimant was not at the place of occurrence. She therefore might not be aware of the details
as to how the accident took place, but the fact that the first information report had been lodged in relation to an accident could not have been ignored. Some discrepancies in the evidences of the complaint's witnesses might have occurred, but the core question before the tribunal and consequently before the High Court was as to whether the bus in question was involved in the accident or not. For the purpose of determining the said issue, the court was required to apply the principle underlying burden of proof in terms of the provisions of section 106 of the Indian Evidence Act as to whether a dead body wrapped in a blanket had been found at the spot at such an early hour, which was required to be proved by the respondent numbers 2 and 3. In a situation of this nature, the tribunal has rightly taken a holistic view of the matter. It was necessary to be borne in mind that strict proof of an accident caused by a particular bus in a particular manner may not be possible to be done by the claimants. The claimants were merely to establish their case on the touchstone of preponderance of probability. The standard of proof beyond reasonable doubt could not have been applied. ये पूरे 500 वर्ड्स थे. ये स्पीड जो है लगभग 101 के आसपास रही है. तो इसको पहले अच्छे से पढ़िए, फिर इसको जो है जो सॉफ्टवेयर है उस पर जाकर के टाइप कर दीजिए और अपनी एक्यूरेसी को जानिए. इस क्लास के अंदर इतना ही बच्चों. नमस्कार बच्चों.